friends to watch my video on YouTube. Subscribe my channel Technowlogic and press bell icon to activate notification. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स योर बॉय टर्बो। और आज हम खेलेंगे एक और गेम, और आज हम खेलेंगे एक डिटेक्शन गेम जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। इट्स अ शेरलॉक होम गेम्स, और आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे शेरलॉक होम इज़ वन ऑफ द फेमस डिटेक्टिव अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिग into it। तो गाइस, मैंने इस गेम को थोड़ा ट्राई किया था, बट उसके बाद मैं सोचा चलिए उस पर सीरीज करते हैं। फ्रॉग वॉज प्रेजेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट, शेरलॉक होम्स, स्टारिंग शेरलॉक होम्स, डॉक्टर जॉन वॉटसन, Inspector G. Desrat, Mr. Hudson, Mycroft Holmes, we get the CSI. Let's start. तो हमारे पहले केस का नाम आई थिंक द फेथ ऑफ द ब्लैक पीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहो, यहाँ शेरलॉक होम्स ब्लाइंड प्रैक्टिस कर रहे हैं शूटिंग की, और वॉटसन परेशान। What a funny starting. Holmes, will you stop that? हाँ, होम्स You are utterly बुलजाई मारने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट लुकिंग, विदाउट यूजिंग हिज आईज। Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Oh, Holmes using its brain power. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, Nice. that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? बेचारा वॉटसन I पागल हो suppose गया। that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. ये हमारा फर्स्ट केस की info टैब। पीटर कैरी करके है हमारा main victim in this case.
यहाँ बॉर्न हुआ था, 50 साल का था, वेल हंटिंग करता था, रिटायर्ड हो गया और यहाँ मूव हुआ था। ये थी जिसका मर्डर हुआ है और ये है लोकेशन। और उससे पहले क्या था, हमको कुछ करना था। ये हमारे केस है, इन्वेस्टिगेट द मर्डर ऑफ पीटर कैरी, इंस्पेक्ट द क्राइम सीन एट वुडलैंड ली, सिलेक्ट वुडमैन्स ली, सिलेक्ट अ सूट टू वेयर यूजिंग। ओके, तब हम एक मिशंस पे जा रहे हैं, तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते, तो लेट्स चूज समथिंग। मॉर्निंग आवर नहीं, हाँ कैजुअल सूट, हाँ ठीक है, इट सही है। ज़रूरत नहीं है हमें। सारी है वुडलैंड मेंशन, सॉरी वुडलैंड मेंशन, सॉरी गाइस, वुडमैन लीज, वी आर गोइंग इन अ कैरेज। तब के लिए टाइम पास करके देखते हैं हमारे आज के 3 मिशन जो हमें कंप्लीट करने हैं। इन्वेस्टिगेट करना है मर्डर केस, उसके बाद एरिया को, सूट तो कंप्लीट हो गया, वो शायद से एरिया में पहुंचने के बाद होगा। देखते हैं आज हमारे कितने टास्क हम कंप्लीट कर पाते हैं। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। Mr. Holmes, I'm over here. Come on. वहाँ पे हो रहा है स्पेक्टर लेस्ट्राड। नेक्स्ट मिशन आ गया। यहाँ कुछ चीज़ दिख रही है हमको, footprints I think. These footprints appear to be quite large. So entering the garden, हमको हमारा पहला क्लू मिल गया। It seems that the garden was well maintained. 2 clues you can say. First footprint, और ओनर का गार्डन बड़ा वेल मेंटेन्ड है। एंड यहाँ पर scenario. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Oh, Allow she me is to the wife introduce you to of Mr. the Sherlock Holmes. He's a man who detective. got killed. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. ये जो ग्रीन बटन है, इससे क्या करता है, शर्लक होम्स स्टार्ट लुकिंग अराउंड पर्सन, पता करते हैं क्या है। एक बर्ड हाउस, गार्डनिंग ग्लोव्स, क्रॉस, कैथोलिक रूस करके एक क्रॉस है। Now, let's start with the conversation first. Anything unusual that night? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. So that. Up next question. Evening before the murder. Can you Before the please murder. tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. अब आपको बॉडी Do मिलेगी। you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Did he have any visitor? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends.
He lived quite an isolated life here after his retirement. वो introvert था, you can say that. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Oh. You know what? Maybe You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Mr. Holmes Thank you, madam. की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें एविडेंस मिले हैं बात करके कि लाइफ इजी नहीं थी, अनहैप्पी थी, और एक रिलीजियस वुमन है वो, और शी वाज पिलग्रिम, भक्त थी चर्च की। उसके पति के साथ। उसके बाद हमें गार्डन वॉल मेंटेन मिला है, फुटप्रिंट, और ये हमारे पीटर, ये सब क्या है? ओहो, कैरेक्टर पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे छुटिया कैरिया मिस कैरल की एक इन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन। चलिए, तो देखिए सिलेक्टिंग सूट हो गया है। नेक्स्ट है हमको कैरेज में जाना है, तो चलते हैं। Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. So guys, a disclaimer for everyone, इस पूरी सीरीज़ में बहुत सारे डेड बॉडीज़ और ब्लड वगैरह, ब्लड शेड दिखाया जाएगा, तो जो भी दर्शक है कृपया अपने विवेक से काम ले। दैट वॉज माई डिस्क्लेमर। लेट्स स्टार्ट इट। ये डोर ओपन करना है। क्या हो गया? The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. ओके, तो किसी ने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की। तो यहाँ पे टी शायद से शर्लक होम्स की स्पेशल एबिलिटी होगी, टू एग्जामिन थिंग्स। तो यहाँ पे स्क्रैच दिख These रहे हैं, scratches are fresh. फ्रेश स्क्रैचेस दिख रहे You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. हैं। ये ऐसा किसी ने ब्रेकअप। गाइस, वंस अगेन देयर इज़, जो आगे जो सीन है वो बिल्कुल भी What a terrible way to die. ये इसका कमरा है, थोड़ा लग रहा है ठीक। फोकस करने के लिए, ओह, शेल्टर पे कुछ है यहाँ। This place is not covered with dust.
like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. तो शेरलॉक होम्स ने अपनी से पता लगाया कि यहाँ से एक डब्बा गायब है शेल्फ से। ये इसको चलो पहले हम डेथ बॉडी को ही एग्जामिन करते हैं। बॉडी का एग्जाम करते हैं। The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. It's a knife. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? तो ये है गाइस इस गेम का मेन पार्ट। जो भी छोटे मोटे क्लूज जो मिलते हैं उसको शर्लॉक होम्स अपने ब्रेन में जोड़ के एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करते हैं। मिनी कंक्लूजन से बड़ा कंक्लूजन। तो अपन ट्राई करते हैं कि पहला ब्रेकिंग अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि अरे नोटबुक क्यों नहीं दिख रही? हाँ, क्योंकि नोटबुक मस्ट बी डोनेट टू सी इफ द ब्रेकिंग अटेम्प्ट। ओके, हमें एक एक्सपेरिमेंट टाइप करना है, ये बता रहा है। Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. ये है तो हमारी डेड बॉडी एग्जामिन करके हमें ये मिला है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग था और वेल ड्रेस था। मतलब जो इसको मारने आया था वो ये उसको जानता था, और जिसने इसको मारा उसके पास भी ही मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि इसको फोर्स के साथ गाड़ दिया। और एक चाकू, मतलब इसने अपने को डिफेंस करने की कोशिश की थी। और वो बुक लगता है कोई आया था। टेबल एग्जामिन करके देखते हैं। Rum, a sailor's drink. Someone drank from this glass recently. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. The initials P. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. हमें एक पिक्चर बनानी है जिससे शेरलॉक कुछ होगा। ओह ऐसा इधर से हमें कुछ
Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. मरने से पहले हमारे पीटर भैया दारू पी रहे थे एज यूजुअल। कोई आया था उससे मिलने जो टबैको स्मोक करता है, जो सेलर्स में है। तो जो मिलने आया था वो भी शायद से जो इसका मर्डरर है या जो मिलने आया था वो भी सेलर ही है, अकॉर्डिंग टू और मिस्टर होम्स। वुडन बॉक्स देखते इसमें क्या है। इसमें Peter pair of Carey's shoes। boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. ठीक है, वो शूज़ पता नहीं क्यों लिए हैं। यश The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. ओके। The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. ओके, तो पीटर कैरी हमारे कैप्टन थे इस टाइम पे। यहाँ शेल्फ तो हमने एग्जामिन। The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. ओके, सो ये था शेल्फ। ये मैप क्या है? Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. ओके, वेलिंग मैप, नथिंग स्पेशल और कुछ। तो ये था हमारा रूम में भी एविडेंस। ये क्या है? डायलॉग्स, पता नहीं इसका क्या मतलब है। सिगार, जूते। तो देखिए हमारे पहले 2 मिशंस हो गए हैं। द एम्बुश विद लेस्ट्रार्ड, द मिस्टीरियस फाइट प्रिपेयर। ओके, एक मिनट। हमने पहले जो शूज़ फाइंड किए थे, फुटप्रिंट, उसके मैचिंग के लिए तो नहीं यूज़ होने वाले? मे बी। These boots don't match the footprints. वो चलो, हमारा पहला वहाँ जो शेल्फ था शायद से वाइफ की डेथ मैन के ओनर को पता हो। लेट्स आस्क हर। और वो पाउच का भी। Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. इसको पता नहीं है वो उसके पति का है या किसी और का। Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. एविडेंस। हाँ, ये तीनों कैसे टास्क थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। ओ, पीटर कैरी का हमें पूरा पता चल गया कि वो कैसा था, क्या क्या है अकॉर्डिंग टू हिज रूम एंड वाइफ। अब चलिए लेस्ट्रार्ड से बात करते हैं एम्बुशमेंट के लिए। Well, Mr. Holmes, what do you think? Now, I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. तो हम जो कैबिनेट है इसके जो बैक डोर है, आई थिंक यहाँ खड़े रहेंगे। This looks like the perfect hiding place. क्योंकि यहाँ से दिख भी रहा है फेथ ऑफ द ब्लैक चीटर।
नाइट हो चुकी है. Mr. Holmes and Inspector Lestrade is standing by, waiting for a mysterious person. Shh! Did you hear that? Someone is trying to break open. दरवाजा खोल रहा है. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. इसको लिया है. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Okay, तो हमने एक यंग बंदे को पकड़ा है जिसका नाम जॉन था. उसको यार्ड ले गया है. Sherlock Holmes would like to talk to him. एक नई लोकेशन है स्कॉटलैंड यार्ड. जो हमारे पास एक है एग्जामिन बिलोंगिंग ऑफ जॉन हॉपलिंग नेलिगन. सॉरी गाइस. 11 स्कॉटलैंड यार्ड. ओके, तो हमारे दो जो नए टास्क जुड़े हैं कि हम यार्ड में हैं. हमें नेलिगन की बिलोंगिंग्स को वो करना है. कहाँ पे ये डोर पर नहीं बल्कि एविडेंस रूम यही है. आई थिंक यही होंगी. These are the suspect's belongings. पहले सबसे छोटी चीज़ ट्राई करते हैं. इसमें तो कुछ भी नहीं. ओह, कुछ लिखा है अंदर. And partner, 1883. पार्टनर 1883. From R. Dawson. R. Dawson To my friend Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. ये इसमें है. अब उसके बाद नेक्स्ट A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials J.H.N. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These are brief. हमने पहला कर लिया है टास्क. अब हमें जो बंदा है जॉन करके बच्चा उससे बात करनी है. किधर ये पढ़ते हैं ना, क्या है मार्क तो नहीं है. उसके बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्राड. ये है क्या? आई थिंक यही है. इंटेरोगेशन. पूरा अंदर बैठा है. लेट्स टॉक टू दैट बॉय. तो इसकी चीज़ें पहले हम नोटबुक से चालू करते हैं. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse.
But I will find out eventually, Mr. Nelligan. ओके ओ सॉरी गाइस, इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, तो चलिए एग्जामिन करते हैं। शेवी कैप, नेक पैच, एक्सपेंसिव फैब्रिक है, शॉर्ट स्लीव्स, हाथ में स्कार्स वगैरह हैं। उसके बाद The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Okay, now let's talk about the gold ring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. क्यों? क्या है? Those एक sharp knife तो नहीं है. Ring engrave. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Ring's honor. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Engraving हो गया. Pile of victim. Tobacco pouch. देखो जो दिखा रहे थे स्लीव्स इसको फिट नहीं हो रहे, बल्कि गार्डन तो हो नहीं सकता। विक्टिम से आधा जैकेट ट्राई करके देखें। No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, सब I पता will भी see कर you लिया soon, और young बेइज्जती भी man. कर दी। Please let me go. I'm innocent. आए हैं, ब्रेक इन अटेम्प्ट हो गया था, नॉन स्पोकर है, नो मिसिंग बॉक्स, नेगलेगन नोटबुक नहीं, स्पेस टू डीसेलेक्ट, उसके बाद स्पेस टू क्रूज, नॉन गार्डन का हो गया, पीटर्स ये हुआ है। The break attempt was made in order to recover the book that had been lying in the pool of victims' blood. This proof that one who made an attempt. Okay. और भी clues हैं, कुछ करने के देखते हैं। Peter, non-spin in wall और non-smoker break in attempt. Injections. We need to find out whether an unskilled and untrained man could use a harpoon well enough to kill a full piercing a body. Okay, एक और experiment type हमको करना है. I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige. और जो है space missing tin box, no gardener या breaking Peter no smoker breaking attempt, pinwall नहीं है, pinwall no gardener भी नहीं है, gardener भी नहीं है। ये तो बाकी कोई भी क्लूज एसोसिएट नहीं कर रहा।
तो इसका सारी बातचीत हो गई। अब जॉन नेलिगन सिस्ट इज दैट ओके ये, और वॉटसन विल ग्लैड टू, एक वॉट्स हमारे चहेते दोस्त वॉटसन के साथ हमें एक वो करना है, इसके बारे में हमें सर्च भी करना है क्राइम में, और हमें मिस्टर नेलिगन का एक वो मिल गया कि वो गरीब है। तो चलिए एक मिनट, टैब यहाँ से हम डायरेक्ट पहले अपने बेकर स्ट्रीट जो आर्काइव है उसमें रिसर्च करेंगे। के बाद परफॉर्म द टास्क। आर्काइव्स का This is where I keep my post. यहाँ क्या बोलते हैं, a heavy golden rig with encryption from Dons in 1883। ठीक है, अब इसमें डॉन्स ये रहा E to Here it is. Okay. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. तो ये देखते हैं, the person and investment fund, a religion bank institution is in bankrupt as a result of heavy loss in the loan profit Allah and according been associated for liquidation. Okay, was the third largest bank in Britain and its bankruptcy was the second largest only. The liquidation of company is a pure catastrophe for many Colombian families. Again, one of the bankrupt has since mysteriously disappeared and was last been his yard prepared for departure to Norway. Is wanted both by police and his creditor. Okay, तो नेलिगन के बाद जो डेड है वो शायद से बैंकरप्ट हुए हैं और मिसिंग थे, तो अभी उसको पुलिस वाले उसके क्रेडिटर सब ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें मिला टास्क, देखते हैं, बता रहा है कि जॉन और एक ये। तो पहले हम वॉटसन के साथ जाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसी के बात करते हैं। A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Okay. तो न्यू जगह है, similar to help. तो हार्पून के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो हार्पून से पहले हम स्कॉटलैंड यार्ड जाके बात कर लेते हैं उस छोकरे से, तो कुछ नहीं क्लूज मिल जाए उसके साथ साथ। हम यार्ड पे पहुंच चुके हैं। लेट्स टॉक टू दैट लिटिल फेलो। जल्दी चलें, एक एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं यही है, चलिए बात ही करनी।
I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. ये सब थी story. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Okay. तो एक शायद से connection हो सकता है. तो task आया है. Ship's log है. Archive. से पहले हम जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करेंगे. तो पहले हमें वुड्समैन ली जाना पड़ेगा और द हार्पून. हम पहुंच गए. जल्दी से हार्पून लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. उसके बाद हमें शिप लॉक्स के लिए जाना है और भी आगे मिशन. That should do it. चलो हमने अपना हार्पून ले लिया है. और वाइट चैपल बुचर साथ में रखा है हमारे. बात करते हैं. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. ओके. तो एम हमें इससे करना है. होल्ड. वो जो पत्ती है. ओके. Holmes, I can't believe it. Did you just miss? Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. मैंने गड़बड़ कर दी. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. मैं थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ एकदम परफेक्ट. जी. Holmes, you should try. Okay, perfect. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. एक्सपीरियंस हमें ये पता चला कि जिसने भी किया है दो पॉसिबिलिटी थी. वी कैन अटेम्प्ट sheer strength नहीं, sheer strength or pin to wall. दो conclusion. It must require and that an average man pierce through a man chest with a degree of skill would.
Or possible that manage to pin with there is a remote possibility. Feast of एक मिनट feast of उस पे जाए। देखो एक दूसरा पर्सन था वो पता चला क्योंकि उसका पति स्मोक करता था। मिसिंग बॉक्स और कुछ भी नहीं है। शिप लॉग्स हमें देखने हैं 1880 ओके 1883 सॉरी। तो हम बेकर स्ट्रीट जाएंगे। पहुंच गए। चलिए फिर से हमको शायद से खाई नहीं ढूंढना है। शिप लॉग्स तो हमने शायद से पीटर ब्लैक के रूम में देखे थे ना कुछ शिप लॉग्स। मे भी वहाँ से कुछ क्लूज मिल जाए। चलिए चेक करते हैं। जल्दी शिप लॉग्स 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Peter Carey. This is the crew list. This log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. टास्क और विगल्स पता नहीं क्या है ये। उसके बाद क्या है फाइंड अ यूज अ पीस ऑफ फाइंड अ यूज। तो अब 2 मिशन हुई है। विगल्स बेकर स्ट्रीट में कोई है। सो आज की वीडियो के लिए मेरा गाइस इतना ही। इस केस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।